सबको एक बार फिर से नमन, वंदन, अभिनंदन इस शाम की आज के आयोजन में। एक शाम जो मिसाल है दुनिया भर में विज्ञान की शाखाओं में और इतिहास में। क्यों आज हम इस में शामिल होने जा रहे हैं? मैं बुलाना चाहूँगा आज की इस शाम की होस्ट सोनिया देबबर्मा जी को, जो त्रिपुरा से जुड़े हुए हैं और दूर दराज की जनजातीय इलाकों से वो आज की इस शाम के बारे में आप सबको सूचित करेंगे। स्वागत है सोनिया देबबर्मा की। Good evening. ओवर टू सोनिया देब। Good evening. Welcome to all of you, and once again, one more evening with science and knowledge. Today, we are here to celebrate the day and the spirit of mankind. Myself, Sonia Deburma from Harishchandrapara, studying at Maharaja Birbikram College, and today I am with you all being the host today's event. So, moving on. He came to be known as the Missile Man of India for his work on development of ballistic missile and launched vehicle technology. Widely referred to as the People's President, as an Indian aerospace scientist who served as the 11th President of India from 2002 to 2007. He spent his 4 decades as a scientist and science administrator, mainly at the Defence Research and Development Organisation, an Indian space research organisation, and was intimately involved in India's civilian space program and military missile development efforts. He also played a pivotal organization technical and political role in India's Pokhran II nuclear test in 1998, the first since the original nuclear test by India in 1974. He returned to his civilian life of education, writing and public service after a single term of 11 President of India from 2002 to 2007, as he regarded himself as teacher. He was a dedicated life for Indian students for innovation. Today is his death anniversary. He is none other than respected Dr. APJ Abdul Kalam. While delivering a lecture at Indian Institute of Management Shillong, Kalam collapsed and died from an apparent cardiac arrest on 27 July 2015, aged 83. We are here to we are here today to collect his spirit, inspiration, blessing, and to celebrate the ever first Dr. APJ Abdul Kalam International Student Scientist Innovation Award 2022. Dr. APJ Abdul Kalam is a bird having wings of fire. We are here today to collect his spirit, inspirational blessing, and to celebrate the ever first Dr. APJ Abdul Kalam International Student Scientist Innovation Award 2022. National Council of Researcher Teacher Scientist India and Pioneer Largest Council of Professor Researcher Teacher Scientist under affiliation of VIPNET, Vigyan Prasar Govt of India, the Wings Organization of DASA India along with DASA India, the pioneer non-profit academic non-political voluntary organization and largest volunteers network dedicated to science popularization to inspire students and teachers. Registered under Societies Registration Act 1861. Under Government of Tripura, operated from HU Agartala, Tripura for its working area at national level of country, along with its inspirational wing organization of National Council of Student Scientists India, concerned to BIPNET Science Club, affiliate under Department of Science and Technology. Government has designed and developed once popular science education and mathematics-based achievements organization student participation program, Dr. APJ Abdul Kalam International Student Scientist Innovation Award 2022. Dr. APJ Abdul Kalam International Student
Scientist Innovation Award 2022 is the ever first program of such kind through the virtual medium under the holistic thematic scientific guidance of Anjan Banik, National Chairman of both DASA India and its wing organizations, National Council of Researcher Teacher Scientist India, National Council of Student Scientist India, Science Writers Association of Tripura and move our Chief Organizing Director of the award program, in memory of most respected, internationally acclaimed missile man of India for his work on the development of ballistic missile and launch vehicle technology, and widely referred to as the People's President, as an Indian aerospace scientist who served as the 11th President of India from 2002 to 2007, His Excellency Dr. APJ Abdul Kalam. Organization of volunteers under the department are an apparel and move more than usual VO in association of leading scientists, advertiser, directors of Government of India such as Department of Science and Technology, CSIR, NIS, CAIR, National Council of Science and Technology Communication, ISRD along with its wing institutions, NESAC, VSSAC, etc., NPL, IISC, IUCCA, different planetariums, National Innovation Foundation, mostly known for Inspire, Manak Award programs, Vigyan Prasar, etc., even of NASA of USA and educationists of IGNO, NCERT, IITS, IISERT, a study center of Ministry of Education and Science, cultural advertised, recognized by Ministry of Culture, National Council of Science Museum, Sangeet Natak Academy, Government of India, secretaries, directors and joint directors of school and higher education departments of state government and different state council of science and technology, a different VIPNET affiliate science and state mathematical societies and clubs, different private schools and educational institution management groups, organization also blessed with their association of mosques of Ramakrishna Math and Mission, Bharat Seva Ashram Sangha, Sri Aurobindo and Sri Sri admire organizations as well as deans, professors serving various Heritage University and Central University. Now, I would like to invite our National Chairman, Sri Anjan Banik sir, for his inaugural welcome address. Over to Anjan sir. Thank you, Sunia, for your valuable words and introduction of this program. जो बातें सुनिया ने बताई वो ना केवल हमें प्रेरित करता है, आज की ये शाम बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ऐसी एक व्यक्तित्व की पुण्यतिथि है जिन्होंने 2002 से 2007 तक भारत की अगुवाई की, पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति के रूप से, और ना केवल ये, उन्होंने एज ए मिसाइल मैन अपना एक और ही दिशा भारत का आत्मनिर्भर बनाने की ओर आगे ले गए थे, और उनको आज हम याद करेंगे। आज हमारे साथ बहुत सारे दिग्गज जुड़े हुए हैं। ऑलरेडी हमारे साथ 2 वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं जो इसरो और पीआरएल इन दोनों में अपना जीवन खपाए। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वेलकम सर, डॉक्टर प्रभाकर शर्मा जी, मोस्ट सीनियर scientist who served ISRO and PRL specially for a long time. Basically, he started his journey from PRL and he have contributed a whole life for PRL and also contributed along with Sarabhai and Kalamji. And along with him, we have another dignitaries, Dr. Bharat Bhai Chaniara. चनियारा सर ने भी अपना जीवन खपाया है इसरो के साथ,
करीब करीब 3 दशकों से उन्होंने जीवन खपाया और आज हमें बताते हुए ये खुशी होती है कि सर बहुत ही सुबह सुबह उठकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग सर, स्पेशली फॉर यू बिकॉज ही इज जॉइंड अस फ्रॉम यूएसए। सर गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर आप दोनों की इजाजत हो तो इसका थोड़ा सा वर्चुअली इनॉग्रेशन करते हैं और फिर क्योंकि भारत चनियारा सर आप बहुत दूर से जुड़े हुए हैं तो आपसे सर सबसे पहले सुनते हैं कलाम जी और उनके कामों के बारे में। तो सबसे पहले सर इनॉग्रल थोड़ा सा लेते हैं सर, प्लीज आपकी परमिशन हो तो। या प्लीज गो अहेड। थैंक यू सर, थैंक यू। प्लेजर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करभावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। संनो मित्रः संवरुणः संनो भवत्वर्यमा संनो इंद्रो बृहस्पतिः संनो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मदेव नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मा वदिष्यामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु आवतु माम् आवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।
ये शाम हम जिन महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के साथ मनाने चाहते हैं, उनकी संक्षेप में बताई जाए तो हम उनको स्वागत करना चाहते हैं। सबसे पहले तो प्रोफेसर टीपी शर्मा सर, कुछ ही देर में वो जुड़ेंगे हमसे। प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड मैथमेटिक्स, और ग्रेट मैथमेटिशियन, belongs and serving for almost 1.5 decade with National Council of Educational Research and Training, NCERT, न्यू दिल्ली। सर की संक्षेप में बताया जाए सर के बारे में तो डॉक्टर टीपी शर्मा सर, सर्विंग इन एनसीईआरटी फॉर 17 years, a magnificent journey from Assam, the northeastern state of India, to New Delhi. He has done MSc PhD mathematics from University of Delhi. Area of work: mathematics education at school level, development of teaching materials, teacher training material, textual material, research, primary mathematics, mathematics education, mathematics. Sir has so many publications. Some of the vital publications are enhancing self-learning, the biggest challenge in mathematics, proceeding of National Conference, RIE Mysore, complexity analysis of bouncing ball dynamical system, which has been published in USA University also, dynamic Liptop indicator, DLI, a perfect indicator of for evaluatory system, 2016. Sir has with us for a long time, and with his blessings we are also continuing our journey, being a DASA India, being a National Council of Researcher Teacher Scientist India, and National Council of Student Scientist India, as well as Science Writers Association of Tripura also. So welcome you, sir, Dr. T.P. Sharma. Today already we have with us most vital person. He joined from USA, as he recently now staying at USA for some time, some months. Dr. Bharat Bhai Chaniara from Ahmedabad, former senior scientist of Indian Space Research Organization, and served for almost 3 decades for ISRO, and especially for Mission EduSat, which is the foremost mission and foremost activity of ISRO also, as well as the dream of Sarabhai also. Dr. Bharat Bhai Chaniara graduated in Electronics and Communication Engineering, initially served in 3 private firms, and then joined Space Application Center ISRO, worked in ISRO for more than 35 years as senior scientist. In ISRO, initially worked in Satellite Control Center to manage the satellites in space. Later on, carried out extensive research and development works on latest technologies such as mobile communication system, video conferencing system, tele-education, which is a dream project of Sarabhai also at the beginning of ISRO, and telemedicine system, satellite-based navigation system like GPS, and various applications for common man using satellite technologies. Satellite system IRNSS project, served as an honorary faculty of Gujarat University Center of United Nations and ISRO staff training program, published 2 papers in international journals, and worked many technical reports, participation in 2 international conferences held at Singapore and Beijing, China. Recipient of ISRO Team Excellence Award and Dr. C.V. Raman Award. He visited 16 countries like America, Europe, European countries, Singapore, Dubai, China, etc. Now he is rendering many social services like coaching to the students for poor community, from poor community, organizing ISRO exhibition, delivering lectures on ISRO school
and colleges guidance the students for higher education in India and abroad, and many services to the community. Dr. Bharat Bhai Chaniara is most foremost strength of our organization also, and he is the advisor of our organization, and he is the man behind the program, the most reliable, most highlighted, most popular program, India International Sarabhai Student Scientist Award also. Sir, thank you, sir, for being with us. Please Thank you. keep your presence here also. Next, we have with us most prominent figure in the field of science and science communication among the scientists also, Dr. Prabhakar Sharma sir, former senior scientist from PRL Physical Research Laboratory, the foremost organization institute of ISRO, uh, Department of Space, Government of India. Dr. Prabhakar Sharma sir, he began his journey from Physical Research Laboratory PRL and end his journey of working, being a scientist here only, served at PRL ISRO. And one great thing, what happened in his life, which is a treasure also, interviewed by Dr. Vikram A. Sarabhai himself, and working experience with both Dr. Vikram A. Sarabhai, the father of the Indian space program, and Dr. APJ Abdul Kalam, the people's president. One interesting fact is that Dr. Prabhakar Sharma sir, date of birth is 17th August 1947, just 2 days after India got its independence. Uh, about his study life, BSc from Bikram University, Ujjain, 1967, being a first. MSc, University of Indore, in 1969, first. PhD from PRL, Gujarat University in Physics Science, 1977, and he also done international postgraduate course in hydrology from Budapest, Hungary, during 1982. Dr. Prabhakar Sharma, he started his journey, and he has one devoted scientist throughout his life for PRL Ahmedabad. He joined PRL being a research scholar in 1st July 1969, and he promoted one by one, step by step, and ultimately got the promotion being a scientist SF head academic service, and got retirement and superannuated during 2007. Now he is advising all these programs and helping in science popularization programs also. About 125 research papers in referred national international journal, 8 books and reports, 25 popular science articles also. Life member of Indian Meteorological Society, visiting faculty, School of Building Science and Technology, Center for Environmental Planning and Technology, Ahmedabad. Member, Special Committee of School Environmental Science, JNU, New Delhi. Fellow, Gujarat Science Academy. So welcome, sir, here in this platform also. Please inspire our students once again. Another person from PRL, senior scientist, Dr. Vishal Joshi. Within a few minutes, he will join us. Dr. Vishal Joshi currently working as a scientist in astronomy and astrophysics division, PRL. Has been working in the field of astronomy and astrophysics for over 12 years. During his research career, he has significantly contributed to the understanding of various physical, orbital, and geometrical aspects occurring on and around novae, supernovae, and other variable stars using ground and space based observations, models, simulators, and theories. After getting master's degree with gold medal in physics from Shorast University 2004, Dr. Joshi joined PRL as a research scholar. He completed his PhD on observational studies on magnetic
symmetric variable stars. He won postdoctoral fellowship award at prestigious institute IUCAA, UCAI, Pune, where he obtained valuable experience in the field of astronomical instrument. He joined PRL as a scientist from January 2016. Dr. Joshi has published more than 30 research papers in reputed journals and including one in the Nature, also the most prestigious journal in the scientific research. He used many large telescope like Mount Abu Infrared Telescope, Himalayan Chandra Telescope, European Very Large Telescope, Infrared Telescope facility in USA, and Hubble Space Telescope for his research. He has significantly contributed towards the computational astrophysics and astronomical data analysis. He has prepared automated data analysis pipeline for several instruments used worldwide. He is currently working on the project of commission 2.5 meter class telescope at Mount Abu Observatory, which is going to be the second largest telescope of India. He is a member of International Astronomical Union, Indian National Science Academy, Astronomical Society of India, Gujarat Mathematics Association, Gujarat Science Academy. He is also very active in science popularization with 150 popular lectures and 50 workshops conducting experience also. So welcome, sir. Please be with us. The least but the foremost, Dr. Narottam Shahu sir will be joining us, senior scientist, advisor and member secretary, GUJCOST, Gujarat Council of Science and Technology, executive director, Gujarat Science City of Department of Science and Technology, Government of Gujarat. Dr. Narottam Shahu sir is a scientist by profession and science educator by training. He has been recognized for his commitment to public engagement and for igniting a sense of wonder among children and citizens by unveiling the interplay between science, technology, and society. Dr. Shahu is presently working as an advisor and member secretary of Gujarat Council of Science and Technology, GUJCOST, Government of Gujarat. He is also senior scientist of Gujarat Science Center, Science City, with which he has been associated since 2001 and now serving as executive director on additional charge. Dr. Shahu has postdoctoral research at Homeo Bhabha Center for Science Education from Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai. He has completed his doctoral research work in chemical sciences at the Regional Research Laboratory CSRI in Bhubaneswar and was conferred with PhD degree by Utkal University in 1999. Narottam Shahu sir has 45 publications to his credit, spread over national and international journals of reputed. Dr. Shahu sir was conferred Dr. B.C. Deb Award for Science Popularization in 2014 by ISCA. He got the recognition of the Best Personality in Science and Technology for 2015 from Computer Society of India in association with Institute of Engineers India. The Indian National Science Academy has conferred its prestigious Indira Gandhi Prize for Science Popularization for 2017 on Dr. Shahu. Recently, Dr. Shahu has been honored by Times Gujarat Icon 2020 by the Times Group. Dr. Shahu is a prolific popular science writer also. So, welcome, sir.
So with this, we are starting our program. We are remembering Dr. Kalam. On this day, he passed away at Shillong. Almost this is the time also. So first of all, we are starting with सबसे दूर बैठे हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर भारत भाई चनियारा सर से ही शुरुआत करते हैं। और ये इसके बाद हम डॉक्टर प्रभाकर शर्मा जी, जिन्होंने अपना जीवन खपाया और जिन्होंने कलाम जी के साथ और सराभाई जी के साथ काम भी किया, उनसे लेंगे। तो सबसे पहले भारत भाई चनियारा सर। सर प्लीज गो हेड। Okay, thank you. Namaskar. Good evening to all of you. Honorable guest, Dr. T.P. Sharma ji, Dr. Prabhakar Sharma ji, Dr. Vishal Joshi ji, Dr. Narottam Sahu ji, and event organizer Sri Anjan Banik ji, dear students, respected teachers and parents. So today I will be briefing about Dr. APJ Abdul Kalam sir. So I will be briefing through PowerPoint presentation. हाँ सर, श्योर सर, करिए सर। Yeah. Okay, as we know, Dr. APJ Abdul Kalam sir is an eminent scientist. नहीं सर, शेयर नहीं हुआ सर, इसको शेयर करिए सर। Okay. शेयर बटन पर दबाइए सर, और फिर स्क्रीन को मिनिमाइज कर दीजिए। हाँ सर, स्क्रीन को मिनिमाइज करिए सर, फुल स्क्रीन करिए सर। Okay. ओके ओके। Okay. So Dr. APJ Abdul Kalam sir is an eminent scientist and very humble personality. So I'll be briefing about him in this presentation. Dr. APJ Abdul Kalam sir was born on 15th October 1931 in small island of Rameswar. His father was a small boat owner and imam of a local mosque, and his mother Asima was an housewife. Kalam was the youngest of 4 brothers and 1 sister in his family. His father was a poor, so he sold newspaper in his childhood. He completed his schooling at Squads Higher Secondary School, Ramnathpuram, and he was very much keen to learn maths and science. He graduated in physics from St. Joseph College, Tiruchirappalli in 1954. Then later on he studied aerospace engineering from Madras Institute of Technology. Initially, Dr. Kalam served in DRDO, Defense Research and Development Organization, and later in 1969, after formation of ISRO, he was transferred to ISRO, that is IS Indian Space Research Organization, and assigned challenging responsibility to develop satellite launch vehicle, that is called SLV. In ISRO, initially he worked on development of sounding rockets, which were used to collect data of upper atmosphere, that is vertical profile of upper atmosphere, and to study the effect of atmosphere on rocket during its flight or during its journey. In 1980, India's first indigenous satellite launch vehicle was successfully placed, Rohini satellite, in space, and Dr. APJ Abdul Kalam sir was the project director for this SLV project. Subsequently, under the guidance of Dr. APJ Abdul Kalam, Augmented Satellite Launch Vehicle and Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) were developed successfully, and
he became famous as a father of rocket technology. PSLV is the most successful satellite launch vehicle who had established world record by placing 104 satellites in space in single flight on 15 February 2017. These are the few pictures of sounding rockets started with RH-74 to RH-5608, which is having different heights, different weights, and different um, trajectory. Different it can go up to different height level. So these are the sounding rocket developed under guidance of Dr. APJ Abdul Kalam sir. Then later on, under his guidance and leadership, satellite launch vehicles were developed. So whatever knowledge gained in sounding rocket, it was used in design and development of satellite launch vehicle. So initially, it was started with SLV, satellite launch vehicle, which is having capacity of 40 kg. Subsequently, ASLV was developed, having capacity of 150 kg. Then PSLV, Polar Satellite Launch Vehicle, having launching capacity of 1,750 kilograms. Then GSLV Mark II, having capacity of 3,500 kilograms. Then GSLV Mark III, having capacity of launching satellite up to 4,000 kg. So these are the different satellite launch vehicles were developed in ISRO under the Dr. APJ Abdul Kalam sir's guidance. After successful development of PSLV program in ISRO, Prime Minister Mrs. Indira Gandhi transferred Kalam sir to DRDO in 1983 and assigned challenging responsibility to develop missiles for our country. So, since he has experience in launch vehicle, so development of missiles under his guidance will be very fast and easy. So he transferred from ISRO to DRDO for the development of missiles. Under his leadership and guidance, the following various missiles were successfully developed. Prithvi missile, surface to surface missile, which is surface to surface missile. Then Trishul missile, short range surface to air missile. Akash, medium range surface to air missile. Nag, third generation anti-tank missile. Subsequently, Dhanush, Prahar, and BrahMos missiles were also developed. By developing so many various types of missile, he became famous for as a missile man of India. These are the few pictures of various missiles which were developed by DRDO. Dr. Kalam served as a chief scientific advisor to the Prime Minister and Secretary of DRDO. He witnessed the country's first nuclear test fire, Smiling Buddha. That was the name of the project. That is, first nuclear test fire was done in Pokhran. Dr. Kalam served as the chief project coordinator during the testing of Pokhran 2 nuclear tests. In Pokhran 2, 5 nuclear tests in 2 days were carried out successfully, and India became sixth nation in the nuclear club of the world. The Kalam, along with Dr. Raju, developed low-cost Kalam Raju stent and low-cost Kalam Raju tablet computer in 2012 for the education and healthcare in rural area. Dr. Kalam served as the 11th president of India and became famous as a people's president because due to his simplicity and easy approachable approach. So he became famous as a people's president. These are a few pictures of Pokhran 2 nuclear test sites. So this was the first site when it was commissioned that nuclear test activity was done here in this site. And this is the picture after a nuclear test fire was done. So there's this same site after test fire. And this is the picture of blast. Here you can see the Dr. APJ Abdul Kalam with other senior scientists.
He also worked with eminent scientists and politicians. So his career was eminent scientist as well as very good administrator and he interacted with so many politicians also. In ISRO, he worked with Dr. Vikram Sarabhai, Professor Satish Dhawan, R. Arvangudam, and developed various satellite launch vehicles. In DRDO, he provided guidance and leadership to senior scientists V.K. Saraswat and V.S. Arunanchalam and developed various types of missiles for India. In defense, in the DAE, Department of Atomic Energy, he worked with under the guidance of Dr. Homi Bhabha for many atomic research program. He also worked with Dr. R. Chidambaram and Dr. Anil Kakodkar during Pokhran 2 nuclear test. So Dr. R. Chidambaram and Dr. Anil Kakodkar were two senior scientists for Pokhran 2 nuclear test project. He served as a scientific advisor to the defense minister. He also served as a principal scientific advisor to the prime minister. This is a picture of Dr. APJ Abdul Kalam as a president of India when he addressed to the nations on 26th January. Dr. Abdul Kalam had two important dreams in his life. One, he wanted to become pilot, fighter of fighter jet plane, because in his childhood he used to see birds flying in the sky and he dreamed to fly in the sky. So he wanted to become pilot of the fighter jet planes, but in selection process he marginally missed the chance. But when he became president of India, the Supreme Commander of Armed Forces of India, on 18th July 2006, at the age of 74 years, Dr. Kalam flown in Sukhoi 30 MKI fighter jet plane and fulfilled his dream after 48 years. So he was the first president who flown in Sukhoi 30 MKI fighter jet plane. Dr. Kalam wanted, another dream was he wanted India to become knowledge superpower and developed country or developed nation by 2020. So he emphasized on agriculture, education, healthcare, infrastructure development, transport, communication, and critical self-reliance on critical technologies. So these are the area he suggested that we should emphasize and work hard on this area so that our country can become developed country. He was a recipient of prestigious awards and honors. Padma Bhushan Award for successful development of satellite launch vehicle in 1981. Padma Vibhushan Award for the successful development of Agni missiles in 1990. Highest civilian award Bharat Ratna in 1997 for his immense contribution in space science and defense technologies. Van Bhushan Award from National Space Society in 2013. Honorable doctorate degree from 40 universities of India and abroad. NASA discovered new bacterium on filter of International Space Station and named as a Solibacillus kalami to honor the Dr. APJ Abdul Kalam. Then he also received King Charles II Medal from Royal Society of UK in 2007. He also received Veer Savarkar Award in 1998 and Ramanujan Award in 2000. He also awarded Indira Gandhi Award for National Integration from the Indian National Congress. In 2008, recipient of Hoover Medal from American Society of Mechanical Engineers, that is ASME Foundation of USA. Dr. Kalam's 79th birth was recognized as a World Students' Day by the United Nations. So he also honored from the United Nations also.
National Missile Test Site, that is Wheeler Island, from where we are launching our test missiles, which is in Odisha, was renamed as Abdul Kalam Island in September 2015 in honor of Dr. APJ Abdul Kalam. Several educational and scientific institutes, universities, roads, and other locations were renamed or named in honor of Dr. APJ Abdul Kalam after his death. On 15th October 2015, on 84th birth anniversary of Dr. APJ Abdul Kalam, the Prime Minister Narendra Modi released postal stamps to honor Dr. APJ Abdul Kalam. These are the few inspiring and motivational quotes of Dr. APJ Abdul Kalam. If you fail, never give up, because fail means first attempt in learning. So we should not be disappointed by failure. We should keep attempt to achieve our goal. If you want to shine like a sun, then first burn like a sun. So if you want to achieve our goal, we have to work hard. Dream is not that which you see while sleeping, but it is something that does not allow you to sleep. So that is about dream. A leader must have a vision for future progress, patience to work for achieving the goals, curiosity to travel an unexplored path, and courage to take decision. These are the quotes about very good leaders, we can say. It is very easy to defeat someone, but it is very hard to win someone. So suppose we want to win someone, it is very difficult. Always dream, and dream in life. Dreams transform into thoughts, thought results in action, and suitable action results in achievements. So we should always dream, and we should try to fulfill our dream. All birds find shelter during the rain, but eagle avoid rain by flying above the cloud. So always overcome the troubles. So this quote says that we should not scared about trouble, but we should always overcome the troubles. Excellence is a continuous process of hard work and does not achieve overnight by an accident. So to achieve excellency, we have to work hard, and we have to work continuously over the long period. So these are the few inspiring quotes of Dr. Abdul Kalam. Lifestyle and noble quality of Dr. Kalam, sir. I am fortunate that I had an opportunity to meet Dr. APJ Abdul Kalam in many occasions in ISRO, and I observed him very closely. He was great scientist, visionary, dreamer, dream achiever, dedicated to hard work, honest, humble, holy personality, and a true gentleman. Even though he was born in a Muslim family, but he had high respect to all other religions also. And he believed that humanism is the biggest quality of a human being. His lifestyle was very simple, and he was taking vegetarian food. He was reading Quran and performing namaz every day. He was fasting during Ramzan. He learned Sanskrit to read and understand Bhagavad Gita. He used to play veena and do meditation for peace of mind. He also wrote many books in English and many poems in Tamil. One book which is became very famous, that is Wings of Fire. That is an autobiography of Dr. APJ Abdul Kalam. End of Legend Personality. On 27th July 2015, Dr. APJ Abdul Kalam was delivering a lecture at Indian Institute of Management, Shillong, where he suffered
a massive heart attack and died at the age of 83 years. On 30th July 2015, the former president and eminent scientist was laid to rest at Rameswar at his birthplace. And around 350,000 people attended the last ritual of Dr. APJ Abdul Kalam. In the memory of late President Dr. APJ Abdul Kalam, a memorial was built in Rameswaram. It showcased various replica of rockets and missiles, acrylic paintings, and hundreds of portraits, which depicts the life of Dr. APJ Abdul Kalam. This is the picture you can see when he was delivering lecture at IIM Shillong, and he had a massive heart attack and he collapsed. So this is the last picture. So he served till the last breath of his last breath, and he collapsed there at Shillong. This is the picture of his last ritual at Rameswaram. Thank you for your kind attention. Thank you, sir, for giving an enlightened view on the journey of our past president. Thank you, sir. Thank you being with us, sir. आप बहुत दूर से जुड़े हमारे साथ और अपना समय दिया, जबकि अमेरिका में अभी बहुत ही ज़्यादा सुबह है, अर्ली मॉर्निंग, तो इस वक्त भी आप जुड़ पाए और जुड़े, तो तहे दिल से आपके शुक्रगुजार है सर. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू सर. आगे बढ़ते हैं. हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ गए हैं हमारे आदरणीय प्रोफेसर तिल प्रसाद शर्मा जी, टीपी शर्मा जी, एनसीईआरटी से वो जुड़े हुए हैं और हमसे बहुत दिनों से इस प्लेटफॉर्म से वो जुड़े हुए हैं. सर थोड़ी ही देर में आपसे रूबरू होंगे, तो उसके पहले सर हम मोस्ट सीनियर पर्सनैलिटी इन साइंटिस्ट कम्युनिटी डॉक्टर प्रभाकर शर्मा जी, जिन्होंने अपना जीवन, पूरा जीवन इसरो के पहले जो संस्था हुआ करती थी पीआरएल, फिजिकल लेबोरेटरी पीआरएल, जो कि साराभाई जी की ड्रीम थी और जहाँ पे उन्होंने साराभाई जी से इंटरव्यू करके अपना योगदान रखा और बाद में कलाम जी के संग काम किया. तो इस व्यक्तित्व से सुनते हैं कलाम जी के स्मरण में उनकी यादें. तो ओवर टू प्रभाकर शर्मा सर. सर आपसे सुनना है सर. थैंक यू जी. थैंक यू वेरी मच. भरत भाई चनियारा साहब ने डॉक्टर कलाम के बारे में बहुत सारी बातें बता दी और मैं कुछ उनकी व्यक्तिगत बातें बताऊंगी. जो मेरा उनका एसोसिएशन करीब 2 साल तक रहा, 2-2.5 साल तक. मैं पीआरएल में रिसर्च स्टूडेंट की तरीके से ज्वाइन किया 69 में और 6 महीने का वहाँ कोर्स वर्क होता था. उसके बाद में मैं त्रिवेंद्रम चला गया, जहाँ मैं कलाम साहब के साथ जुड़ा. हम लोग अपर एटमॉस्फेयर स्टडी के लिए रॉकेट्स फायर करते थे, तो उसमें हमारा पेलोड्स होता था और कलाम साहब उसको इंटीग्रेट करके उसको ऊपर भेजते थे. तो उस वक्त तो इंडिया में रॉकेट्स बनते नहीं थे, तो रशिया के M100 रॉकेट्स आते थे, पर साइड बाय साइड कलाम साहब रॉकेट भी डेवलप करते थे और कई बार फेल्योर होता था. तो चूंकि रॉकेट डेवलपमेंट का काम भी वहीं होता था जहां हम लोग पेलोड असेंबल करते थे, तो मैंने उनको बहुत नजदीकी से काम करते हुए देखा. कई बार हमारे रॉकेट्स फेल भी हो गए, पर कलाम साहब कभी निराश नहीं हुए. उन्होंने बोला था कि फेल्यूर इज ए पार्ट ऑफ लर्निंग, इफ यू डोंट फेल यू डोंट लर्न एनीथिंग, तो फेल्यूर गिव्स यू अ मेथड टू लर्न. तो ये उनका बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड था और अपने साथ वाले भी जो लोग थे उनको काफी एनकरेज करते थे. और जब कभी रॉकेट सक्सेसफुल हो जाता था तो वो सबको शाबाशी देते थे, बोले आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और ऐसे ही करते रहिए. और अगर उस टाइम फेल्योर्स भी बहुत होते थे, रॉकेट समुद्र में गिर जाता था, तो कलाम साहब बोलते थे नहीं नहीं नहीं, मेरे कुछ लीडरशिप में कमी रह गई है, चलो मैं और अच्छा से काम करूंगा. तो उनमें एक सबसे बड़ी बात थी, वो 24 आवर्स वर्कर थे. वो आपको पता है कि ऑफिस में तो 8 घंटे या 9 घंटे काम होता है, उसमें से भी लोग लंच और टी और ये निकाल के 6-7 घंटे ही काम कर पाते हैं. पर कलाम साहब तो 24 आवर्स काम करते थे और रात को मैंने उनको वहाँ ऑफिस में ही सोते हुए देखा, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स होती थी. तो वो 2 टेबल्स को ज्वाइन करके
और एक मच्छरदानी ऊपर से लगा के, क्योंकि वहाँ केरल कोस्ट में मच्छर बहुत होते थे, तो वहीं सो जाते थे वो, और फिर सुबह उठ के जल्दी 4 बजे उठ के, क्योंकि 6 बजे 6 साढ़े 6 बजे सुबह फ्लाइट होती थी, तो वो काम शुरू कर देते थे। तो बहुत हार्ड वर्किंग थे, और मतलब ये है कि टोटल डेडिकेशन था उनका। ऐसे नहीं कि उनका जॉब है इसलिए, जॉब के जैसे काम नहीं करते थे वो। ही वाज़ कंप्लीटली डिवोटेड टू हिज वर्क। सो दैट वाज़ द थिंग व्हिच आई लर्न्ड फ्रॉम हिम, कि अगर आपको कोई काम करना है तो ये 9 टू 5 जॉब नहीं है। साइंटिस्ट का जॉब जो होता है वो 9 टू 5 नहीं होता है। वो तो 24 आवर्स 365 डेज़ होता है। तो ये बात मैंने आगे के जीवन में भी उनसे सीखी, और बहुत ही सरल स्वभाव के आदमी थे वो। बहुत ही इतने सरल थे कि हर आदमी से बड़े प्रेम से मिलते थे, और ये उनका सरल स्वभाव जब वो राष्ट्रपति बन गए उसके बाद भी वैसे का वैसे ही रहा। एक बार मैं उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करने गया, पीआरएल की डायमंड जुबली सेलिब्रेशन था, तो मैं उनको एयरपोर्ट पे, चूँकि मैं उनके साथ काम कर चुका था, तो पीआरएल से मैं उनको एयरपोर्ट पे वहाँ पे हेलीपैड पे रिसीव करने गया। तो वो गले मिले, तो वहाँ के सिक्योरिटी वालों ने मुझको हटाने की कोशिश की, नहीं, 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 आप प्रेसिडेंट से गले मिल नहीं मिल सकते। तो उन्होंने वापस बुलाया कि नहीं, नहीं, ये तो मेरे कोलैबोरेटर हैं, ये मेरे साथ में काम करते थे। फिर उन्होंने अलाउ किया। तो वो इतने सरल स्वभाव के थे, मैंने 2 बार राष्ट्रपति भवन में उनके साथ जाके चाय पी, उनका ओपन इन्विटेशन था। उनके साथ जो काम करते थे कि आप जब भी दिल्ली आइए, मेरे साथ आके, अगर मैं दिल्ली में हूँ, तो आप मेरे साथ चाय पीजिए। तो मुझको 2 बार उनके साथ राष्ट्रपति भवन में चाय पीने का मौका मिला, और वैसे ही बड़ी आत्मीयता से, ऐसा नहीं लगता था कि वो प्रेसिडेंट हैं और मैं उनके साथ कोई बहुत जूनियर आदमी हूँ। वो वैसे ही बात करते थे जैसे हम लोग आमने-सामने टेबल पर बैठ के काम करते थे, तो उसी तरह की उनकी अप्रोच होती थी। और बाद में भी कई बार मिलने का मौका मिला। कई बार मैं एयरपोर्ट उनको रिसीव करने जाता था, तो उनकी ही कार में बिठाते थे वो। वैसे नॉर्मली प्रेसिडेंट की कार में बैठना अलाउड नहीं होता है। और वो बहुत काम के बारे में पूछते थे, और पीआरएल के बारे में पूछते थे। पीआरएल तो एक्चुअली उस ज़माने में अर्ली 70s में इसरो पीआरएल में ही था। 2-3 कमरों में पीआरएल में इसरो होता था। तो पीआरएल जो होता हो है, वो इसरो की मदर इंस्टीट्यूट के बारे में जाना जाता है। उसको मदर इंस्टीट्यूट ही बोलते हैं। तो इस पूरा इसरो का जन्म, अब तो इसरो इतना बड़ा हो गया है कि उसमें 50 पीआरएल आ जाएँ। मगर पीआरएल का जो कल्चर ओरिजिनल है, वो डॉक्टर साराभाई और डॉक्टर कलाम की वजह से वैसा का वैसा ही है अभी भी वैसा का वैसा ही है। तो उनका ये कहना था कि साइंस और टेक्नोलॉजी में जो काम करते हैं, उनमें इन्फॉर्मेलिटी होना बहुत ज़रूरी है। वो हम सबको अपने फर्स्ट नेम से बुलाते थे, ये नहीं थी कि शर्मा या शर्मा जी, ऐसे नहीं। हर उनके साथ जो भी आदमी काम करता था, उस टाइम पे भी उनके साथ करीब 60-70 लोग काम करते थे, उसमें मैकेनिक होते थे, बहुत सारे लोग होते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होते थे, मैकेनिकल इंजीनियर होते थे। तो सबको अपने फर्स्ट नेम से ही बुलाते थे, और ये आखिरी तक उनका चालू रहा। फिर बाद में तो वो 72 में वहाँ से डीआरडीओ चले गए, और मेरा भी काम खत्म हो गया, तो मैं वापस पीआरएल में आ गया, और फिर मैं सैटेलाइट के ऊपर काम करने लगा, क्योंकि पीआरएल में तो कोई रॉकेट की फैसिलिटी नहीं थी। और वो जो 2 ढाई साल मैंने उनके साथ काम किया, वो ज़िंदगी के बहुत ही मेमोरेबल चीज़ें थी। और सबसे बड़ा उनका जो अप्रोच था कि वो हर आदमी को बड़ा एनकरेज करते थे। किसी को ऐसे नीचे की दृष्टि से नहीं देखते थे, चाहे वो कोई भी हो उनके साथ काम करने वाला। तो अगर आप स्टूडेंट्स में या टीचर्स में भी आप भी कभी लीडर बन जाएँ, तो हर आदमी जो आपके साथ काम करता है, उसकी अच्छी क्वालिटीज़ को देख के उसको एनकरेज करिए, तो और अच्छा काम करेगा वो। तो ये उनकी एक बहुत ख़ासियत थी। और चनियारा सर ने उनकी पर्सनल क्वालिटीज़ के बारे में बहुत सारी बातें बताई है। वो गीता में भी उतने ही विद्वान थे जितने वो कुरान में थे। और उनकी आप किताबें पढ़िए तो उसमें भगवत गीता, और वहाँ साउथ इंडिया में एक संत हुए हैं तिरुवल्लुवर, तो उनके कोट्स बहुत सारे वो देते थे, और वो बहुत ही मतलब प्रकांड विद्वान थे। रोज योग करते थे, और ज़मीन पर बैठ के खाना खाते थे। मैं उनको ज़मीन पर बैठ के, जब राष्ट्रपति बन गए तब भी ज़मीन पर बैठ के खाना खाते थे, और बड़ा सिंपल साउथ इंडियन खाना खाते थे वो। और एक उनकी बात जो मुझको पता है, उन्होंने वो पोएट्री भी बहुत अच्छी लिखते थे। उन्होंने जब वो आए थे, तो उन्होंने उनकी एक बुक मुझको पर्सनली गिफ्ट की थी, ल्यूमिनस स्पार्क्स नाम था। बहुत ही सरल अंग्रेजी में, और बड़ी बड़ी सुंदर कविताएँ लिखते थे। तो वास्तव में एक वो मतलब उनका हृदय जो था, एक कवि का हृदय था, और आपको पता है कवि का हृदय बड़ा सरल होता है। बड़ी सरल भाषा में अपनी बातें बताते थे वो। तो कलाम साहब का तो व्यक्तित्व ऐसा था कि वास्तव में शायद हमको ऐसा प्रेसिडेंट तो कभी मिलेगा नहीं। और इवन जब वो प्रेसिडेंट थे, तब भी वो साइंस के बारे में उनकी बहुत रुचि थी, और खासकर स्टूडेंट्स के बारे में। एक्चुअली वो जो यूनेस्को ने
जो टीचर का उनको वो दिया है, वो वास्तव में टीचर थे वो। अपनी पर्सनल ज़िंदगी में भी टीचर थे वो, उनसे कई बातें सिखाते थे हम लोगों को और स्टूडेंट से इंटरेक्शन तो उनका मेन एक वो अप्रोच था। जब भी मौका मिलता वो स्टूडेंट से बात करते थे, जब प्रेसिडेंट थे तब भी स्टूडेंट से बात करते थे वो। और ये बात मैंने भी सीखी, इंदौर में आके मैं भी स्कूल्स में, कॉलेजेस में लेक्चर्स देने जाता हूँ, अभी ऑनलाइन भी देता हूँ और कई स्कूल्स ने मुझको इनवाइट किया था उनकी सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली में। तो एक बड़ी अच्छी बात जो मैंने सीखी कि देखिए स्टूडेंट्स से बात करने में अ, हाँ, टीचर भी सीखता है, खाली स्टूडेंट नहीं सीखते, टीचर को भी सीखने को मिलता है। तो वो बहुत अच्छे-अच्छे आइडियाज़ स्टूडेंट्स को देते थे और हम लोग भी जब उनके साथ में काम करते थे, तो हमको छोटी-छोटी वो चीज़ें देते थे कि चलो आप ये करके बताओ। जैसे वो ये बोलते थे कि आप एक पेपर से एरोप्लेन बना के बताओ, हम लोगों ने बचपन में सीखा था। बोले देखो मेरा एरोप्लेन कितनी दूर जाता है। तो वो बहुत बहुत एंटरटेनिंग थे वो, ऐसा नहीं कि वो काम ही करते थे। वो बहुत छोटी ये मशीन कैसे काम करती है, इसको खोलो आप, इसको खोल के देखो। रॉकेट कैसे उड़ता है, अगर इसमें फ्यूल ऐसे नहीं भरेंगे तो क्या क्या होगा इसका? रॉकेट फेल क्यों होता है ये भी बताते थे कि फेल्योर क्यों हो जाता है रॉकेट का। तो वो सही मायने में वो हमको सिखाते भी जाते थे और ऐसे काम होता था तो ऐसा लगता नहीं था कि हम कोई ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, ऐसा लगता था हम कोई अपने एक मित्र के साथ बैठ के वही काम कर रहे हैं। तो जो ऑफ़िस का एनवायरनमेंट भी था वो बड़ा बहुत ही फ्रेंडली था, बीच-बीच में चाय भी आती थी और नाश्ता भी आता था और कलाम साहब भी हमारे साथ बैठ के खाते थे, ऐसा नहीं कि वो उनके लिए कुछ अलग से होता था। तो ये उनकी बड़ी अच्छी अप्रोच थी कि वो ऑफ़िस को होमली एनवायरनमेंट बना के काम करते थे। तो उससे आदमी का मन भी आपको पता नहीं लगता था कि कब आपके 10 घंटे निकल गए या कब आपकी रात निकल गई। तो वो वास्तव में एक लीडर थे, लीडरशिप की जो क्वालिटी थी, ये उनमें बहुत कूट-कूट के भरी हुई थी। तो कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, पर मैं बहुत लंबा समय नहीं लूँगा और पता नहीं हाँ कुछ सवाल-जवाब का सेशन है या नहीं है, तो मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर हमने सवाल-जवाब नहीं रखा, आज अच्छा, सिर्फ़ उनके याद करना है। तो आपके अच्छा, साथ सर बहुत सारी चीज़ें जानने का मौका मिला सबको, बहुत सारे लोग देख रहे हैं जी, तो उनको सीखने का भी मौका मिला। थैंक यू सर। जी, आप हमारे जी, सर जी, तो ठीक सर है। आप थैंक यू सो हमारे मच। साथ बने और उनके बारे में बहुत सारी बातें बताई। मतलब जो अनसंग स्टोरीज़ थी, वो आप जी, पन्ने पन्ने खोले और हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सर। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं। आज की शाम न केवल डॉक्टर कलाम जी की पुण्यतिथि है, आज की शाम हम कलाम जी की स्मरण में जो प्रोग्राम का आगाज़ किया गया था 15 अक्टूबर पिछले साल, जो कि उनकी जन्म तिथि है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल स्टूडेंट साइंटिस्ट इनोवेशन अवार्ड। जो बच्चे आज इनोवेटिव तरीके से कुछ करना चाहते हैं, वो अपनी ज़रिए देश को कुछ बताना चाहते हैं, इस आज़ादी की अमृत महोत्सव पर पहली बार इस सम्मान से उन लोगों को नवाजा जा रहा है। और ये सभी प्रोग्राम जो कि दासा इंडिया की ओर से या फिर नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्चर टीचर साइंटिस्ट इंडिया की ओर से या फिर नेशनल काउंसिल ऑफ स्टूडेंट का साइंटिस्ट की ओर से, जो कि विज्ञान प्रसार के भारत सरकार के विज्ञान और प्रजुक्ति प्रौद्योगिक विभाग के अंतर्गत विपनेट स्कीम के तहत एफिलिएटेड है, एकेडमिकली एफिलिएटेड है, उसके साथ जुड़कर हमने करने की कोशिश की है और बच्चों को एक नया दिशा देने की और वैज्ञानिकों के साथ, एडुकेशनिस्टों के साथ मिलने जुलने और उनकी बातें सुनकर प्रेरित मौका हमने ढूंढ निकाला है। तो इसी का पहला आगाज इस साल किया जा रहा है और 6 बच्चों को इस बार पुरस्कृत किया जाएगा, जिनमें से 3 बच्चों को अवार्ड की तरीके से दिया जाएगा और बाकी 3 बच्चों को कंसोलेशन अवार्ड की तरीके से दिया जाएगा, क्योंकि हम स्कूली बच्चों को ज़्यादातर प्रोत्साहन देना चाहते हैं। तो 3 बच्चे स्कूल से और बाकी 3 बच्चे जो है वो स्कूल की बड़ी क्लास और यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल के हैं, तो उनको कंसोलेशन अवार्ड की तरह दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। इस पूरे
काम काज की दारोमदार की पीछे हमें जिनका प्रेरणा मिल चुका है, मिलता रहता है, एनसीईआरटी के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन साइंस एंड मैथमेटिक्स के अध्यापक सीनियर प्रोफेसर टीपी शर्मा सर, जो कि जिसके बारे में हम कुछ ही देर पहले उनकी बायोग्राफी सुन चुके इनॉग्रल की पार्ट में। तो हम उनसे आज की शाम की उनकी आशीर्वाणी, उनकी मार्गदर्शन लेना चाहेंगे। सर अनम्यूट करें सर अपने आप को। डॉक्टर टीपी शर्मा सर। Am I audible? यस सर। अच्छा, गुड इवनिंग। आज मैं शुरू में ज्वाइन नहीं कर पाया, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और ये आपने जो शुरुआत किया है आज एक जो अवार्ड सेरेमनी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल स्टूडेंट साइंटिस्ट, ये इनोवेशंस, ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हमारे लिए साइंस बहुत इम्पोर्टेंट है। और साइंस ऐसा चीज़ है हमारे लिए जो समस्या हमारे चारों ओर होता है उसका समाधान देता है। और कोई एक चीज़, जैसे आज पहले तो हम, आपने जैसे अभी बोला कि 3 बच्चे स्कूल के हैं और 3 कॉलेज यूनिवर्सिटी के हैं, उनको हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना, ताकि वो लोग भी आगे जाके साइंस में हमारे देश को ज़रूर कुछ दे सकें हमेशा। क्योंकि एक चीज़ होता है कि हम लगे रहें तो हमको ज़रूर कुछ मिलेगा। तो इसलिए, और एक ब्रेक थ्रू ट्राइब, जैसे कलाम सर ने जो करके गए, और उनका जिन्होंने किताब लिखा है, हम मौका लगे तो वो किताब भी हम पढ़ें। और उन्होंने जितना मेहनत किया इसी तरीके से कुछ अंश अगर उन्होंने जो भी किया है वो अगर हम करके उनके आदर्श को अगर हम अपने आप मान के कुछ मेहनत हम करते रहें। और आज जितना यहाँ महानुभव ने, जैसे भारत भाई चनारिया सर, प्रभा शर्मा सर, और बाकी जो भी यहाँ विशिष्ट अतिथि हैं, उन्होंने भाषण माने लेक्चर देंगे, बच्चों को उत्साहन करेंगे, इनकरेज करेंगे। ये हमारा बहुत बड़ा काम है। और मैं इसके लिए अंजन बनिक और उनके सारे टीम को, मैं जब से अंजन बनिक को जानता हूँ तब से मैंने देखा है बहुत नज़दीक से, बहुत मेहनती हैं और स्पेशली साइंस और मैथमेटिक्स के लिए समय समय पर बहुत कार्यक्रम करते हैं और बच्चों को आगे बढ़ने में एक मौका देते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और हम सब मिलके, हम जैसे सर ने कहा, अभी प्रभाकर सर ने कहा कि बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना, जैसे कलाम साहब भी करते थे, हमारे नेबरहुड के बच्चों को भी हम जैसे उनका रिजल्ट आया, उनके सुबह शाम घूमते समय हम उनसे बातचीत करें और हमेशा इनकरेज करें। हमारे बच्चे आगे बढ़े तो हमारे देश ज़रूर आगे बढ़ेगा। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि आज साइंस का प्रोग्राम है, अवार्ड विनिंग सेरेमनी है, और ये बच्चों को बहुत बहुत बधाई। और स्पेशली अंजन बनिक, आप आगे भी और अच्छा काम करें ताकि आपके माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म से अच्छे हमारे वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट बन सके। यही शुभकामना के साथ मैं सभी बच्चों को बधाई और सभी यहाँ उपस्थित अतिथि का और अंजन बनिक और टीम का मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपका ब्लेसिंग्स बना रहे, बस इतना ही काफ़ी है सर। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ आज बने हुए हैं एक और दिग्गज, जो जिसके बारे में इनॉग्रेल सेशन में हमने स्लाइड चलाकर बताया था कि सर गुजकॉस्ट से जुड़े हुए हैं, वैज्ञानिक है और गुजकॉस्ट गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एडवाइज़र मेंबर सेक्रेटरी के तौर पे वहाँ पे काम कर रहे हैं। वो न केवल गुजकॉस्ट के साथ जुड़े हुए हैं, भारत भर के साइंस पॉपुलराइजेशन की क्षेत्र को भी आगे ले जाने के काम में उनकी योगदान सराहनीय है, जिसके लिए इंसा की तरफ से भी उनको सम्मानित किया गया है। साथ में ही वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीनियर साइंटिस्ट की हिसाब से जुड़े हुए हैं
गुजरात साइंस सिटी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की निगरानी में काम करता है। और देश भर की जितने भी बड़े बड़े इवेंट होती है, साइंटिफिक इवेंट, उनको वो संभाल रहे हैं और आजकल आगे भी संभालने की कोशिश करें। इस साल भी 2020 इज द नेशनल ईयर, इंटरनेशनल ईयर फॉर बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसके लिए भी पूरे देश भर को जो प्रोग्राम यूएन की तरफ से दिया गया है उसकी भी मेजबानी कर रहे हैं डॉक्टर नरोत्तम साहू सर। तो सर हमारे साथ बने हुए हैं। सर वेलकम सर। Good evening, namaste, welcome to everybody. नमस्ते सर। And स्वागत है आप। स्वागत and greetings and good wishes to all of you. Sri Anjan ji, respected Professor Dr. Prabhakar Sharma sir, Dr. Bharat Chanyadia sir, Professor Dr. T.P. Sharma sir, Dr. Vishal Joshi, all the members of this National Council of Researcher, Teachers, Scientists India, and the BIPNet club members, and all these organizations, those who are participating and organizing this program today. Today is a very auspicious day, खास करके जो हमारे तरीके का जो इंस्टीट्यूशन है साइंस के लिए प्रचार प्रसार करते हैं एंड बच्चों के लिए जो एक प्लेटफॉर्म देते हैं। बिकॉज आज हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पीपल प्रेसिडेंट, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, आप जो भी बताना है, पद्म विभूषण, एवरीथिंग, वो सारा सम्मान ने भूषित होकर के भी वो एक पीपल साइंटिस्ट तरीके से, पीपल प्रेसिडेंट तरीके से इनका आज पुण्यतिथि है। हमको लगता नहीं कि आज हमारा डॉक्टर कलाम सर आज हमारे पास है ही नहीं है। वो इतने बच्चों के साथ, खास करके साइंस के जो जुड़ा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन और इनका लोगों के साथ इतना जुड़ा हुआ है, तो ये लोगों के लिए जैसे वो हमारे लिए अमर है। बिकॉज वो सब चीज़ ऐसे बताते थे कि आपको हमको काम करना ही है, जो कि हम लोगों को इस तरीके का काम को, जैसे हमारा इनका परिणति हमारा सामने में होगा। हमको ड्रीम देखने के पहले हमको ड्रीम के बारे में पूरा हमको सारा, जैसे हमारे पास पूरा 3D ऑब्जेक्ट जैसा हो जाता है, तो ऐसे तरीके से हमारे पास इनका कंफर्मेशन एंड ऑल दिस थिंग्स आना चाहिए। तो हम लोग भी, आई रिमेंबर हिज एसोसिएशन, हिज motivation, encouragement, inspiration in all National Children's Science Congress, where whenever he has to grace the occasion, when whatever the may be the venue, जहाँ पे भी वो पहुँचेंगे वहाँ पे वो सेशन का जो ऑडियंस होता है वहाँ पे कोई भी एक स्पेस नहीं रहता है कि यहाँ पे खाली है, आप लोगों को थोड़ा सा आराम से बैठना है, खड़ा, सबको खड़ा होकर के सुनना है। एंड साइंस सिटी का शुरुआत से डॉक्टर अब्दुल कलाम यहाँ पे इनके ये किया थे, जर्नी शुरू भी किया थे। एंड काफ़ी बार यहाँ पे आकर के काफ़ी प्रोग्राम में वो हमारा साथ, हमारा मार्गदर्शन, हमारा मेंटर तरीके से हमको गाइड किया हुआ है, बच्चों को इंस्पायर किया। एंड इसी सिलसिला में आज इनके तिरोधान का डे के में, इनके डेथ एनिवर्सरी एंड पुण्यतिथि के अवसर पर आप लोग इतने अच्छा प्रोग्राम का संयोजन किया है, जिसमें हमारा वरिष्ठ वैज्ञानिक जैसे प्रभाकर शर्मा सर हैं, डॉक्टर भारत साहब है, प्रोफेसर टीपी शर्मा साहब है, एंड आप लोग खुद हैं इनके साथ जुड़ा करके बच्चों का हौसला को इतना बढ़ावा देने के लिए इनके नाम में आज एक प्राइज भी आप इंस्टीट्यूट किया है एंड इनको आज डिस्ट्रीब्यूट करने का आज प्लान किया हुआ है। तो मैं इस अवसर में वो सारा ऑर्गेनाइजर को बधाई देना चाहता हूँ। एंड जो आज वो प्राइज विन करके आज इनका प्राइज आज यहाँ से लेंगे, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। एंड इनके अब्दुल कलाम का एक भी कोई एक इनका इंस्पिरेशन वर्ड, इनका इंस्पिरेशन का एक कोई भी एक मैसेज को ये लोग सपोज इनके लाइफ में लेंगे, तो ये इनका कैरियर के लिए, फ्यूचर के लिए एंड डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के लिए वो इतने ही प्रेरणादायक होगा। हम लोग कभी भी हम लोग नहीं सोचता है कि ये मेरा ऑफिस का पीछे भी हम लोग दो महापुरुष जो है, हमारा
father of space scientist Dr. Vikram Sarabhai, and हमारा people president and president of India and missile man of India और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का फोटो हम लोग रखा है। एंड हर दिन में मेरा शुरुआत ये दोनों महाअनुभव के चेहरा से हम लोग को शुरू करता है। एंड इसमें हम लोग को प्रेरणा मिलता है। कभी भी हमको ऐसा कोई लगता है कि कोई हम लोगों का एक बहुत प्रेशर है, वर्क प्रेशर है, कोई अलग का कोई सिचुएशन होता है, वी हैव टू लुक इनटू ए while to this photograph or this image, and we get immense motivation and inspiration from the inside. So ये एक ऐसा पर्सनालिटी है जिसको आप देखने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, आपका पूरा एक मोटिवेशन और आपके पूरा विजुअलाइजेशन आपका पूरा चेंज हो जाएगा। व्हाटएवर आपका जो भी था, इसके लिए आप अपना इनका सोल्यूशन निकल करके आएगा। तो ये आज का दिन का एंड हमारा महान जो साइंटिस्ट हैं, जो सारा देश को एक नया ऊंचाई तक ले लिया हुआ है, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का आज पुण्यतिथि के ये एक स्मरण करने का बात है। तो आई वंस अगेन कंग्रेचुलेट डॉक्टर बनिक अंजन साहब and all his team members and all the organizer for remembering Dr. APJ Abdul Kalam and inspiring the younger generation with a pride, with his name, with his fame, and with his inspiration to give them a career and future. So I also take this opportunity to invite all the prize winners of this program this evening to Gujarat Science City and to visit Gujarat Science City as quick as possible and be a part of this science journey of India, which was also initiated by Dr. Kalam and his inspiration. So Science City के जो अभी last week में we got the news that Science City has been recognized as one of the best learning destination in the world by Times Magazine, which has this worldwide inspiration. They have identified 50 destinations all over the world in this planet Earth, and one of the thing is our Gujarat Science City, Ahmedabad. So I would like to invite the organizers as well as the prize winners of today's function to be guest of our Guj Coast and visit Science City, and we will take care of your logistics and will showcase you how the science can be disseminated among the children, among the public, among the common people, so that you can get lots of inspirations and motivation, and together we can keep this journey forward and to travel a lot of things and to achieve this dreams and desires of Dr. Kalam, Dr. Vikram Sarabhai, our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi Sahab, and all the things so that India can take the true leadership. So बहुत बहुत बधाई सब लोगों के लिए, ऑर्गेनाइजर के लिए एंड हमारा प्राइज विनर के लिए। एंड मैं चाहता हूँ हम लोग जल्दी से जल्दी हम लोग साइंस सिटी में मुलाकात लेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत अच्छा। पहली बार आप हमारे मंच से जुड़े और आपकी मार्गदर्शन हमें मिला। सर की दो बातें बहुत अच्छी है, बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है शायद। सबसे पहला तो सर ने जो मार्गदर्शन दिया कि आप अपने घर पे, अपने रूम पे इस तरह की तस्वीर कुछ और ही एहसास जगे उनकी पथ पर चलने के, उनकी अगुवाई में आगे बढ़ने की। और दूसरी बात कि एज ए लर्निंग टूल या फिर लर्निंग एस्पेक्ट्स आप साइंस सिटी में विजिट करें। आप गुज कोस्ट इज ए वन पायोनियर साइंस सिटी, जहाँ पे बहुत बड़ा जगह है और जहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज़ भी है, बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट्स है और बहुत सारी थीम पर बनी हुई उनकी मेहनत वहाँ पे झलकती है। तो वहाँ पे एक बार सर के अगुवाई में जाए और उसका लर्निंग अप्रोच आप देखें, उसे सीखने की, समझने की कोशिश करें। और अगर आपके घर के पास भी कोई साइंस सिटी है
वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हैं। तो थैंक यू सर फॉर योर वाइटल Thank you. पॉइंट्स एंड मार्गदर्शन। उस पर आगे चल के पूरे देश को कुछ नया मिलेगा और बच्चों को भी इनोवेटिव आइडियाज तो मिलेगा ही। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। Thank you. आगे बढ़ते हैं। अभी हम और एक साइंटिस्ट से मिलेंगे, लेकिन इसके पहले जो कि पीआरएल से ही है, डॉक्टर विशाल जोशी, वो कुछ ही देर में हमसे रूबरू होंगे। वो हमारे स्क्रीन पर आने के लिए बेताब है और कुछ ही देर में वो हमसे रूबरू होंगे और आपको मार्गदर्शन देंगे। तब तक हम इस साल जो 15 अक्टूबर 2021 को जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया, लगभग 150 के करीब बच्चे इस बार पहली बार हमसे जुड़े और इसमें अटेम्प्ट किए और लगभग 4 चरणों में उनका जो स्क्रीनिंग हुआ, उस स्क्रीनिंग के बाद सारे देश भर से पहले तो 150 में से लगभग 50% हमने चुना और इसके बाद और 50% इस तरीके से कर इनोवेशन पर काम करने वाले 3 बच्चों को हमने चुना है और बाकी जो 3 बच्चों को चुना गया है उनको ऑफिशियली अवार्ड तो दिया जा रहा है, लेकिन ये कंसोलेशन प्राइज होगा। तो उन बच्चों के कुछ तकनीकी वजह से या टेक्निकली उनके कुछ पॉइंट्स है, जैसे वो स्कूल में नहीं है और उनका जो इनोवेशन है उस पर हमारी एक्सपर्ट्स की राय थी कि उसमें थोड़ा सा डाउटफुलनेस कुछ तो है, लेकिन आइडिया उनकी बहुत सराहनीय है। तो उनके उस प्रेरणा की वजह से ही हमें मौका मिला कि उनको सम्मानित करने का। तो सबसे पहले तो जानते हैं उन बच्चों के नाम और सर्टिफिकेट देखते हैं और इसके बाद हम उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे फीडबैक लेंगे कि वो उनको कैसा लगा। और इसके बाद साथ ही हम सुनेंगे पीआरएल्स के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर विशाल जोशी को, जो बेताब है हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहला विनर सनु वर्मा। कॉन्ग्रेचुलेशन सनु। ये उनका सर्टिफिकेट का नमूना है जो वर्चुअली उनके दिया जाएगा। सेकंड विनर तन्वी वर्मा। कॉन्ग्रेचुलेशन तन्वी। ये उनका सर्टिफिकेट का नमूना है जो वर्चुअली अब तक तो इनको दिया जाएगा। आनंद सिंह।
ये उनका सर्टिफिकेट का नमूना है। कंग्रेचुलेशन आनंद सिंह। कंसोलेशन कैटेगरी में सबसे पहला नाम जो आता है वो है मनीष कुमार त्रिपाठी। वो कॉलेज में है और हमारे साथ उनका जो शेयर किया है उन्होंने इनोवेशन, वो भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग से है। ये उनका सर्टिफिकेट का, मनीष कुमार त्रिपाठी, कंग्रेचुलेशन। प्रणब पीडी बेंगलोर से है। कंग्रेचुलेशन प्रणब पीडी, वो भी कॉलेज में है। ये उनका सर्टिफिकेट। कंग्रेचुलेशन प्रणब पीडी। और आखिरी जो है प्रियांशु जोशी। ये कंग्रेचुलेशन प्रियांशु जोशी, ये इनका सर्टिफिकेट है। तो ये 6 इस साल की विनर, सबको नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड टीचर साइंटिस्ट, नेशनल काउंसिल ऑफ स्टूडेंट साइंटिस्ट इंडिया, साइंस राइटर्स एसोसिएशन त्रिपुरा, जो कि वेबनेट विज्ञान प्रसार डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अनुमोदित है, एफिलिएटेड है, और साथ में दासा इंडिया की तरफ से सब एक बार मैं बुलाना चाहूँगा, हमारे साथ बने हुए हैं एनसीईआरटी के अध्यापक डॉक्टर टीपी शर्मा सर। सर, इन बच्चों के लिए 2 शब्द और। सर प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, और इतने बच्चों के बीच में आप सब ने सफलता हासिल किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जिस आइडिया लेके आगे बढ़े हैं, इसको कंटिन्यूसली आप काम करते रहेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि वर्ल्ड के फोरम में आपका नाम हम सब सुन पाएंगे, और हमारे भारतवर्ष को एक नॉलेज, जो नॉलेज का बहुत ज़रूरत है डिफरेंट फील्ड में, वो हम सबको देंगे, और हमारा देश का नाम बहुत उज्जवल होगा, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। और आपको फिर हमारे तरफ से और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और यहाँ जितने उपस्थित व्यक्ति हैं जो साइंटिस्ट रहे हैं, वहाँ के तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई और नमन, धन्यवाद। हमारे साथ बने हुए हैं पीआरएल अहमदाबाद, जो कि इसरो की एक संस्था है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, उसी के सीनियर वैज्ञानिक, लेकिन उन्हें कुछ तकनीकी वजह से मुश्किल हो रही है। डॉक्टर विशाल जोशी सर, आप अपने आप को अनम्यूट करें सर। विशाल सर।
हाँ सर, आप अनम्यूट है सर, बताएं सर। सर किसी भी लैंग्वेज में बताएं सर, हिंदी में बताएं सर, बच्चे समझते हैं, इंग्लिश भी समझते हैं। कुछ तकनीकी वजह से सर हमारे बीच आ नहीं पा रहे हैं, तो सबसे पहले हम विनरों में से सनु वर्मा को आमंत्रण करना चाहते हैं। सनु, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। Good evening, sir. And it has been a really good experience since I have joined this from the starting. It has been 2 years recently when I joined your programs and all. And about this program, it has been really good. It enhanced the art skills, also the science and math skills as always. So it was a really good experience. थैंक यू। नेक्स्ट विनर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तन्वी वर्मा। तन्वी, कंग्रेचुलेशन। Good evening, sir. Sir, am I audible? Yes. So it's been an amazing experience since the starting. We have gained a lot of experience and knowledge. I tried really hard this time, and I will try even harder next time. Okay. Now I would like to invite आनंद सिंह। आनंद सिंह, आप बने हुए हैं? Yes, sir. अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। Good evening, all respected teachers and all my colleagues. सर, ये बहुत ही अच्छा फील्ड है और सर यहाँ कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग चीज़ मिले। हम 2 या 3 साल से इसमें पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा सर। कुछ वेबिनार्स थे मैथ के, जियोजेब्रा से रिलेटेड, मैथ कैलकुलस का, वो भी बहुत अच्छा लगा था। और रियली सर, I'm very fascinated that I got a chance to participate here. Thank you, sir. Thank you. Manish Tripathi, are you here? जब तक मनीष त्रिपाठी जी नहीं आते तब तक यहाँ पे हमारे शर्मा सर भी है। अगले साल एक बार फिर से आज़ादी का अमृत महोत्सव, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल स्टूडेंट साइंटिस्ट इनोवेशन अवार्ड 2023 ये प्रोग्राम होगा। और ये प्रोग्राम शुरुआत हम करेंगे 15 अक्टूबर, जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की जन्म जयंती भी है उस दिन। और
आप सबको जो लिंक इस बार दिया गया है उसी लिंक पे जाके एक बार फिर से अपनी डिटेल्स और साथ में अपना इनोवेशन, जो आपने इनोवेशन किया है उसका आप एक पीडीएफ बनाएं और पीडीएफ के पहले पन्ने पर भी आप अपने नाम, अपने पता, अपना फोटो लगा के और उसके साथ ही अपने स्कूल की डिटेल्स और अपने पोस्टल एड्रेस, जिस पोस्ट पर आपको हमें प्राइज वगैरह भेजना है तो उसकी एड्रेस विथ माइलस्टोन और पिन कोड आप लिख के उसको पीडीएफ बनाएं। अपना जो इनोवेशन है उसका पूरा डिटेल्स पिक्चर वगैरह के साथ देकर उसका इनोवेशन का पूरा पीडीएफ बनाएं और उस पीडीएफ को आप अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड करें। और उस गूगल ड्राइव पर अपलोड करने के बाद आपको उस गूगल ड्राइव से एक लिंक मिलेगा उस पीडीएफ का। उस लिंक को सबसे पहले सेटिंग्स में जाके आप उसको शेयरेबल बना दें, क्योंकि आप अगर उसको सेटिंग में जाकर शेयरेबल नहीं बनाते हैं तो वो लिंक पर जाने पर वो चीज़, वो पीडीएफ दूसरों को नहीं दिखाई देता है, उसका परमिशन मांगते हैं गूगल। तो उसको शेयरेबल लिंक बना दे और फिर उस शेयरेबल लिंक बनाने से कोई भी वहाँ पे जा सकता है उस लिंक के ज़रिए और उसको देख सकता है। तो ये करके आप वो लिंक अपनी जो फॉर्म है उस फॉर्म पे आप डाल दें। गूगल फॉर्म है, फॉर्म आपको पता ही है, इसका जो टीनी URL IIASIIA ये है। तो उस पर आप डाल दे और ये हम तक पहुंच जाएगा। और जब भी इवैल्यूएशन होगा तो उस पीडीएफ खोलना ज़रूरी है, वो इवैल्यूएटर को वो मिल जाए, क्योंकि हम इवैल्यूएटर जो काम करते हैं इस तरीके से करते हैं कि वो उस कॉपी लिंक को कॉपी करते हैं और क्रोम के ऊपर कॉपी पेस्ट करने पर ये ऑटोमेटिकली खुल जाता है, लेकिन तभी जब ये शेयरेबल लिंक हो। तो वो वहाँ से फर्स्ट फेज का जो काम है स्क्रीनिंग का वो करते हैं और बारी बारी उनकी तरफ से जो डेवलप किया हुआ है डिज़ाइन इवैल्यूएशन का उस पर बेस करके वो आपको इवैल्यूएट करते हैं। हमारे साथ अब तो बने हुए हैं मनीष त्रिपाठी जी, जो कॉलेज में है और उनको कंसोलेशन अवार्ड मिला हुआ है। कांग्रेचुलेशन मनीष त्रिपाठी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच वेरी मच एंड बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, डॉक्टर टीपी शर्मा सर एंड अंजुन बनिक सर। आई वांट टू से दैट मैं कुछ शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि जैसा हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ। वो हमारे भारतीय गणतंत्र के 11वें पूर्व राष्ट्रपति, मिसाइल मैन और जिनको हम इंजीनियर, अभियंता और क्या क्या हम कह सकते हैं उनके बारे में बहुत, उन्होंने जिस तरह से समाज को, हमारे एक आज के युवा को एक आईने की तरह जिस तरह से दिखाया है, रास्ता दिखाया है, जो आयाम दिखाए हैं, जिस तरह से उनके काम थे, जिस तरह से उनकी सादगी थी, जिस तरह का उनका डिसिप्लिन था, वो आज की युवा पीढ़ी को बहुत ही प्रेरणा देता है, बहुत ही प्रेरणादायी देता है। जो उन्होंने इनोवेशन किए भारतीय साइंस में, उन्होंने विज्ञान को एक बहुत ही अलग ही लेवल के स्तर पे ले गए। आज हम जानते हैं कि उन्होंने भारत के लिए अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल जैसी कई तमाम मिसाइलों का परीक्षण किया और ना ही सफल परीक्षण किया और भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी दी जो भारत के पास एक समय पे नहीं थी। तो आज परमाणु परीक्षण से भी या न्यूक्लियर परीक्षण हो, वो सारी चीजों को कलाम साहब की वजह से ही आज ये देश इतना संपन्न है। आज हम ये कहना चाहेंगे कि वो सच में वास्तव में अगर देखा जाए तो कलाम साहब एक देश के राष्ट्रपति नहीं बल्कि उनको जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता था। वाकई में उनका जो काम था, जो उनकी थिंकिंग थी, वो काफी सराहनीय है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कलाम साहब हमेशा कहते थे कि अगर आज की युवा पीढ़ी या बच्चे जो भी सोच लें अपने जीवन में, जो भी एक बार ठान लें, अगर आप अपने सपने सच करना चाहते हैं तो ऐसा कोई सपना, ऐसा कोई ड्रीम नहीं है कि जो आप पूरा नहीं कर सकते। तो आप उनको बस सोचें, करें और प्रयास करें। तो सब इसी के साथ मैं सबसे पहले डॉक्टर टीपी शर्मा जी, जो कि DSM NCERT के हैं, प्रोफेसर
मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सर आपका, कि आपने हमेशा हम सबकी का मार्गदर्शन किया है, चाहे वो इसरो के साराभाई श्रेष्ठ साइंटिस्ट अवार्ड का प्रोग्राम रहा हो, चाहे जो भी आपने हमेशा हम सब बच्चों को गाइडेंस दिया है, मार्गदर्शन दिया है, और आपका जो भी कार्य रहा है वो हमेशा ही हम बच्चों को प्रेरणादायी रहा है। और मैं इसके साथ साथ डॉक्टर भरत भाई चनियारा जी का, जो कि हमारे इसरो के सीनियर साइंटिस्ट रहे, मैं उनका, और इसके साथ साथ डॉक्टर प्रभाकर शर्मा जी, जो कि हमारे इसरो के सीनियर साइंटिस्ट, जो कि जिनके पास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ साथ डॉक्टर विक्रम साराभाई जी के साथ साथ काम करने का अनुभव प्राप्त रहा है, उनके साथ उनका भी हमें मार्गदर्शन समय समय पर मिलता रहा है, और उनसे भी हम बच्चों को बहुत कुछ जानने के बारे में मौका मिला। और इसके साथ साथ मैं डॉक्टर विशाल जोशी जी, जो कि सीनियर साइंटिस्ट PRLM इसरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सभी साइंटिस्ट लोगों की वजह से आज हम बच्चों को बहुत कुछ साइंस के बारे में क्या क्या इनोवेशन चल रहा है, क्या क्या चीजें जानने को मिली, और हमें बहुत ढेर सारी जानकारियां मिलती रही हैं कि किस तरह से हम आज के बच्चे, किस तरह से हम एक साइंटिस्ट बन सकते हैं, और हमारा ये जो इनोवेशन है, जो चीजें हैं, ये इनोवेशन भारत के लिए आगे काम है, हमारी यही सोच है। और इसके साथ साथ आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं इसरो के और इन सभी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं मिस्टर अंजन बनिक सर, जो हमारे चेयरमैन हैं डासा इंडिया के, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन सर, अंजन बनिक सर, कि आपने हम बच्चों को ऐसे प्रोग्राम से अवगत कराया जो कि हम बच्चों को बहुत ही आगे ले जा रहा है। और आज के, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, चाहे वो कॉलेज के बच्चे हों, आज हम सबको एक नया प्लेटफॉर्म मिला है जहां पे हम अपने इनोवेशन से लेके साइंस के बारे में बहुत कुछ जान रहे हैं, सीख रहे हैं, जो कहीं और नहीं मिलता। तो मैं ये कहना चाहता हूं सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चाहे वो आपके मार्गदर्शन में हम लोग को बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली हमेशा, चाहे वो साराभाई स्टूडेंट साइंटिस्ट अवार्ड का प्रोग्राम रहा हो, चाहे वो इनोवेशन का अवार्ड का प्रोग्राम रहा हो, आपने हम बच्चों को हमेशा ही गाइडेंस दिया है, हम बच्चों को हमेशा मार्गदर्शन किया है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन सर आपका। एक बार मैं आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा हमारे अंजन बनिक सर, जो कि हमारे चेयरमैन हैं डासा इंडिया के। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू मनीष त्रिपाठी, और कॉन्ग्रेचुलेशन ये कंसोलेशन अवार्ड के लिए। आगे बढ़ते हैं। कुछ तकनीकी वजह से डॉक्टर विशाल जोशी जी हमसे जुड़ नहीं पाए, उनको कुछ काम भी आ गया है और वो निकल गए थे, तो अगली बार वो जुड़ेंगे। उनको कैमरे में कुछ कमियां आ रही थी। तो आगे बढ़ते हैं। हम आखिरी छोर पर पहुंचे आज की इस अवार्ड कन्फरिंग सेरेमनी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल स्टूडेंट साइंटिस्ट इनोवेशन अवार्ड फर्स्ट टाइम 2022, और साथ में ही द रिमेम्बरिंग सेरेमनी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि उनकी पुण्यतिथि भी है। तो मैं बुलाना चाहूँगा, हमारे साथ बने हुए हैं कादम्बरी जैन जी मुंबई से, और उन्हें वोट ऑफ थैंक्स के लिए कादम्बरी जैन जी। विद्या प्रशस्यते लोकैः, विद्या सर्वत्र गौरव, विद्यया लप्ते सर्वं, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। A warm and graceful evening to our most valued, honorable, respected guests, respected chairmen, dignitaries, and everyone gathered here. I feel honored to propose this vote of thanks on behalf of the organizers, DASA India. I'm grateful to all our honored guests for sparing their valuable time for us and gracing this function. I thank Professor Dr. T.P. Sharma, Department of Education in Science and Mathematics, NCERT, for his inspirational thoughts, motivation, and great insight. I thank Dr. Bharat Chaniara, ex-senior scientist, ISRO, Government of India, for his remarkable presence and sharing his views and blessing us with his words of wisdom. I express my gratitude to Dr. Prabhakar Sharma, ex-senior scientist, ISRO, Government of India,
for his encouraging words and motivation. I thank Dr. Vishal Joshi, Senior Scientist, PRL, ISRO, Government of India. Though he could not be present here, but we soon shall have him on this program and take his blessings too. I thank Dr. Narottam Sahu, Scientist, Secretary, Guj Coast, Government of Gujarat, for sharing his experience and encouraging us. I take this opportunity to thank Mr. Anjan Banik, National Chairman, DASA India, and National Chief, India International Student Scientist Innovation Award, for all his efforts and perseverance in conducting this entire program. I'm thankful to Ms. Sunia Debarma from Tripura for all her efforts towards anchoring and beautiful presentation. I also extend my thanks to Dr. Bikash Mishra, Professor of Education and Science Community and recipient of the National Award for Science Popularization from DST Government of India. I would also like to thank all the participants and wish them good luck for the future. Last but not the least, I thank the entire team of DASA India for their efforts in successfully conducting this program. And thank you to all those who are connected here with us online. Once again, I thank you one and all and take your leave with grateful heart. Thank you. Thank you, madam. Madam is not only our member, he is also a legal expert and advocate also. And it's our opportunity to greet him also here. Thank you, ma'am, once again. Thank you, sir. And it's just a last point of our program. We are sharing the screen and it will get end. तो इसी के साथ आज का ये शाम खत्म होता है। बच्चों को हम मेडल भेजेंगे और इस तरीके का मेडल होगा। ये बच्चों को मिलेगा इनोवेशन अवार्ड के लिए। और बाकी अगले साल जब इसका शुरुआत किया जाएगा 15 अक्टूबर को, तो हम पिछले जितने भी साल थे उन सभी सालों में जितने भी बच्चे, स्पेशली हमारे और भी जितने भी प्रोग्राम थी, जैसे कि इंडिया इंटरनेशनल सर्विस स्टूडेंट साइंटिस्ट अवार्ड, उस प्रोग्राम की विनिंग बच्चों को भी हम इस इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित करके आगे बढ़ेंगे और उनको नई इनोवेशन अवार्ड का आगाज करेंगे। तो इस साल के लिए इस अमृत महोत्सव के अवसर पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंडिया इंटरनेशनल स्टूडेंट साइंटिस्ट इनोवेशन अवार्ड की
अवार्डिंग सेरेमनी यहाँ पे ही समापन की जाती है। धन्यवाद सर।